Good morning, everyone. I hope you are doing good. This is Sapna Madne. I'm the director of Yayin Studios and I'm into VFX and animation industry. Today we are going to talk about worldwide career opportunities in animation and VFX. So before that, I'd like to give you a little brief introduction about my company and my career and how I got here into this industry. So, Yain Studios is a export oriented unit company. We work for France, Canada, US market. So what we basically do is we take work from France and we give it to that way you can call it as outsource based company and touch with most of the companies in India with the direct, the top people, the owners of the company. We know which company follows which pipeline. Like in animation, there are various companies; they have their own pipelines. Yain Studios, it's a purely visual effects company. So we have worked on Hellboy. I'll send the link of the company website in the description below. You can go and check out our projects. We have worked on Spider-Man Homecoming. We have worked on Kung Fu Yoga. We have worked on Hellboy 3 and a lot of movies. So after that, uh, I thought somewhere we felt the need of having skilled artists in the industry. There is a lot of need in this industry about work, and because nowadays you must be seeing there are a lot of movies which has high end visual effects these days. A lot of animation is being used, and not just in Hollywood movies. There are Chinese movies, of course, but then even in Bollywood and especially Telugu movies and South industry, they go crazy about visual effects and animation. And why not? When the technology is there, why not use it? When James Cameron was doing, I think in 1997, he was shooting Titanic. He had the concept of Avatar in that at that time, but because of the technology and limitation in this industry was little limited. He couldn't portray what he had in mind, yeah, the great idea of the Navi world he had in mind. So after that, the technology has been improved in last 10 to 20 decades, 10 to 20 years. In last 1 or 2 decades, you must have seen एनिमेशन का यूज आजकल की मूवीज में इट्स सो कॉमन और हम लोग रेगुलर ऑडियंस की जैसे ये मूवीज देखते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नो कि एग्जैक्टली कितना वीएफएक्स यूज किया हुआ है लेट्स टेक फॉर एग्जांपल फैन मूवी ऑफ शाहरुख खान सो वेयर हिज फेस हैज बीन श्रिंकन डाउन सो दैट वो यंग दिखे उस मूवी में देयर इज लॉट ऑफ विजुअल इफेक्ट्स वर्क बिहाइंड दैट Shahrukh Khan, of course, has his own company, Red Chilies. They do high visual effects. So this is a little brief introduction about what sort of projects we do, what sort of this industry is, and what is the technical aspect behind this industry and where this is leading in these days. I'd like to give you a little brief introduction about myself. I'm Sapna Madne, and being in this industry, I started my career with Disney movies. I worked in Tinkerbell. You can find all my projects on IMDb. You can just type in my name, Sapna Madne, IMDb, and you can see what and all movies I have worked so far. And yes, I'm very excited about today about talking this to you. So yeah, let's start. Choosing animation as a career was the best decision I took in my life. I love working in movies. It's all fascinating. As a child, I always loved watching, cartoon series like Powerpuff Girls were one of my favorite, and then Dexter's Laboratory and Aladdin, of course, and the list goes on. Bambi. When it goes to movies, high-end VFX movies. Uh, the audience we cannot say is only for children oriented, from an adult, from an old people, from everybody, from age of 2 till their old age, they can definitely enjoy these movies. और ये सब मूवीज में स्पेशली आजकल देखा जाए तो लेट्स टेक फॉर एवेंजर्स आई एम श्योर एवरीवन ओवर हियर मस्ट बी अ मार्वल फैन or at least a Disney fan, or at least any superhero fan. आजकल हर किसी को Iron Man is like one of the most famous characters in the movie industry. Then as
the list goes on about the movies and the visual effects and stuff like that. So there must be a lot of people who may not be knowing how it is done, or who does this, who does the magic behind these. So animators and visual effects artists do that. We call artists. There's always an artist label behind your profile. If you're a 3D artist, if you're a visual effects artist, because it's a digital art. You're creating on computer. You're creating something fascinating, which entire world is going to see, and it requires a lot of artistic skills. It requires a lot of fun when you do it. So yeah, I thought choosing animation would be the best thing in today's world, as all of you guys must be on the internet most of the time. Let's face it, internet आजकल it's very easy to get access to internet. हर किसी के phone में everybody is watching something. Everybody, especially after this pandemic, OTT platforms like YouTube, Amazon Prime, and you just name it, Hotstar. So हर एक लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं, एंड लोगों के देखने का जो ये है, व्हाट यू से रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है. मूवीज में विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन का यूज बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा है आजकल. यू मस्ट बी सीइंग द ट्रांजिशन बिटवीन लास्ट 10 years of the movies. So when I had options after my graduation, I thought, "Ki, what to do?" There was engineering and definitely an option. Then there are a lot of things which were an option, but I thought, oh, and when I heard about animation, I thought if you could pursue this as your career, then nothing like it. And it would be fun calling up your friends and telling them that, hey, I'm working on Spider-Man. What are you working on? And the best part about this is you can always take out the shots you have worked in the movies. You can put it in your demo reel. You can show the entire world that this shot is done by you, like some part of it or some department of it. And then अगर यही आप किसी let's just say किसी IT कंपनी में आप काम कर रहे हो, if you develop something which is very amazing and which is outstanding, but उसका जो copyright है या whatever, the credit always goes to the company. It doesn't say कि अरे Wipro के इस employee ने ये किया है. No, the Wipro has come up with something like this. So in this industry, being an artist, you have a lot of luxuries in terms of freedom, in terms of the exciting projects, in terms of the things you get to work on. When it comes to animation, it's not just about movies. We'll go a little deeper into that a little later on. Let's just get into what exactly is animation. बहुत short में मैं आपको समझा देती हूँ. आप लोग बहुत I'm sure everybody must be having a lot of ideas about it, and probably you all are right. So एनिमेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक डेफिनेशन ऐसे होता है कि कोई भी इमेज या कोई भी सेट ऑफ इमेजेस अगर आप एक साथ प्ले करते हो तो ऐसे लगता है कि उसमें मूवमेंट हो रही है. फॉर एग्जांपल, सपोज दिस गाय इज हियर, एंड पहले इमेज में उसका हाथ यहाँ पे है और लास्ट के इमेज में उसका हाथ यहाँ पे है. जब आप वो सारे इमेजेस एक साथ प्ले करते हो तो ऐसे लगता है कि उसका हाथ हिल रहा है. द इल्यूजन ऑफ मोशन व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस आर प्लेड टुगेदर. अभी जो इमेजेस है उसके अंदर, दैट इज दोज आर ईदर कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस और दोज आर ट्रेडिशनल हैंड ड्रिवन इमेजेस. जैसे हम लोगों ने पहले का देखा होगा, लाइक द अर्लियर काइंड ऑफ एनिमेशन लाइक टॉम एंड जेरी और शिनचैन भी ले लो या डोरेमोन भी ले लो. सो ऑल दोज आर फ्लैट, राइट? यू डोंट सी डेप्थ इनटू दैट. Whereas Kung Fu Panda and Moana or How to Train Your Dragon, these kind of movies comes. It's very visible करके वो लोग एक they make a sequence out of it, they make a movie out of it. डिज्नी के अगर आप स्टार्टिंग के मूवीज देखते हो, बैम्बी, द ओरिजिनल लायन किंग, सो ऑल दोज आर द क्लासिक एग्जांपल ऑफ 2D एनिमेशन. नाउ लेट्स गो टू 3D एनिमेशन. 3D एनिमेशन में क्या होता है कि सब कुछ आप कंप्यूटर पे क्रिएट करते हो. देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स टू हेल्प यू आउट. देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स हु आर स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट थिंग्स. एनिमेशन is a little, it's not just आपने कोई एक कैरेक्टर ले लिया बना दिया मूवी, ऐसे नहीं होता है. उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. Like say when you go to engineering, you have four or five majors that you can do: computer, mechanical, civil, ENTC, and etc. So in animation, if you see, to make a movie, एक मूवी बनाने के लिए भले ही वो 5 मिनट की हो, 5 सेकंड की हो या 5 घंटे की हो,
बनाना तो आपको सब कुछ पड़ता है, कैरेक्टर, उसके बाल, फिर टेक्सचरिंग आ गई, उसके स्किन स्किन के जैसे दिखनी चाहिए, उसके आंखें आंखों के जैसे दिखनी चाहिए, या फिर देयर इज अ वुड और देयर इज अ मेटल, तो उस दोनों का डिफरेंस टेक्सचरिंग से समझ में आता है. लाइटिंग इज वन वेरी इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट. Lighting can make your stuff look beautiful, or if it's done wrongly, it can definitely make it look worse. So then FX comes. I'm an FX artist. My specialization is into FX, special effects. So 2020 मूवी का अगर आपने ट्रेलर या मूवी भी देखा होगा, उसमें सब कुछ पूरी दुनिया टूटते हुए दिखाई है. तो जो कुछ भी टूटता है, समंदर में ये आता है, व्हाट इज, सुनामी आती है, बारिश आती है, या आग लगती है कहीं भी. सो ऑल दिस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स एफेक्ट्स वाइज दे फॉल इनटू एफेक्ट्स डिपार्टमेंट. सो फिर उसमें एफेक्ट्स किया जाता है, फिर फाइनल कंपोजिटिंग है. यू पुट ऑल द स्टफ टुगेदर. देन देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट टू मेक फॉलिएज. जैसे पेड़ जंगल बुक अगर आपने देखा होगा, सो देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज, there are a lot of different type of animals and all that. So there is a department for each and every thing. It goes in a process. You could say there are approximately 22 to 25 departments. डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी क्या करती है. कोई कंपनी गेमिंग में होती है, कोई कंपनी मूवीज में होती है, someone is advertisement and augmented reality. There are a lot of stuff. There are a lot of branches that goes to animation. Uh, So I hope you understood what 3D animation is, what 2D animation is. Let's talk about visual effects. बहुत से लोगों का ये थोड़ा सा confusion होता है कि visual effects क्या है, फिर animation क्या है. Effects is very simple. आप जो कुछ भी live action movie देखते हो, उसके अंदर whatever extra stuff you see, special effects, that is visual effects. The classic example for it would be बाहुबली और रोबो 2 रजनीकांत का जो है. तो the movie budget was more than आई थिंक 550 करोड़ के आसपास उसका बजट था. तो जब मूवी का बजट बहुत ज्यादा होता है या मूवी में बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं, तो जैसे एवेंजर्स और एनी मार्वल मूवी यू टेक इट, दोज आर स्टैंडर्ड एग्जांपल्स फॉर विजुअल इफेक्ट्स मूवी, हाई एंड वीएफएक्स. उसमें बहुत कुछ, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, सो द हीरो इज रियल एंड द और लेट्स से हल्क इज अ एनिमेटेड कैरेक्टर, बट वो रियल शूट किए हुए मूवी में दिखाई देता है. सो ऑल दोज मूवीज आर कॉल्ड visual effects movies. You can take Marvel movies, a classic example for that. So when it comes to, this is basically the main streams of animation. This is how it's done. आप लाइव एक्शन में विजुअल इफेक्ट्स में क्या होता है, ग्रीन स्क्रीन क्रोमा होता है उसके सामने. आजकल की ईच एंड एवरी हॉलीवुड मूवीज इफ यू टेक, उनका जो एनवायरनमेंट होता है, फॉर एग्जांपल 300 मूवी अगर आप लेते हो, तो द एंटायर मूवी वाज शॉट, you could say, in a very big hall with a blue screen or a green screen. उसको हम लोग क्रोमा कहते हैं, क्रोमा शूट. तो फिर उसके बाद वो कैरेक्टर वहां से ग्रीन स्क्रीन से निकाला जाता है, एंड देन उसको एनिमेटेड और विजुअल इफेक्ट्स में क्रिएट किए हुए सीन फाइल में रखा जाता है. देन द फाइनल आउटपुट कम्स. So it looks like the Transformers robot is there, the Hulk character is there in the shoot. So that is visual effects. These are the main I would say categories of animation, जिसको हम लोग technically divide कर सकते हैं. Now let's get into our subject of this webinar, which is worldwide career opportunities with VFX and animation. अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एनिमेशन मूवीज में बनाया जाता, मूवीज के लिए होता है. ठीक है, उसका स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि इफ यू गाइस सी मूवीज के बजट्स जो है, आई थिंक अप टू 20, 30 और 50 करोड़ शूटिंग के लिए. अगर आप बहुत अच्छा भी शूट करते हो स्टार कास्ट के लिए, इट्स मोर देन इनफ. उसके बाद वॉट एवर एक्स्ट्रा इज एडेड इन दैट, आजकल मूवीज का अलग से बजट होता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र इज कमिंग, विच इज करण जोहर्स मूवी. उसका भी बजट बहुत ज्यादा है, 200-250 करोड़ के आसपास है. तो उसमें बहुत जो कुछ भी स्पेशल इफेक्ट्स यूज किया जाता है, तो मेजोरिटी बजट गोज इनटू दैट. लेट्स से उसमें से आई एम श्योर द बजट मस्ट बी समवेयर अराउंड एटलीस्ट 180 करोड़ के आसपास उसका सिर्फ वीएफएक्स का बजट होगा, या 150 करोड़ तो फॉर श्योर होगा. तो उसमें क्या होता है, वेयर डज दिस 150 करोड़ गोज? It goes to the artist it goes to the company who is doing the work, and it goes to the artists who are working on this. Basically to the animators who have done animation and who are working as animators.
इसमें सिर्फ एक इशू हो रहा है आज के इंडस्ट्री में और इंडियन एजुकेशन इंडस्ट्री में, आई वुड से अप टू डेट नॉलेज इज रियली इंपॉर्टेंट इन एनिमेशन. जैसे ये इंडस्ट्री पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, राइट? सो एक्सक्यूज मी. सो हर एक चीज के लिए 22 से 25 डिपार्टमेंट्स है. फॉर ईच एंड एवरीथिंग देयर इज ऑप्शन, देयर आर आउटस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट. और हर एक कंपनी का अलग से पाइपलाइन होता है. जैसे ड्रीमवर्क्स का सॉफ्टवेयर चॉइस विड बी वेरी डिफरेंट देन व्हाट डिज्नी यूज. देन इट मस्ट बी वेरी डिफरेंट देन व्हाट ब्लू स्काई यूज, या पैरामाउंट का अलग से ही होगा सेट ऑफ सॉफ्टवेयर. बहुत बड़ी जो कंपनीज होती है उनका खुद का सॉफ्टवेयर, they develop their own softwares with their technical department, and that way what happens is it becomes very important कि आप कौन से अपडेटेड सॉफ्टवेयर पे पढ़ रहे हो या कौन से इस पे आपका प्रैक्टिस है, और what software you have your hands on basically. So you should be able to know what softwares are there in the market, which company is using which software. There is no point using 2000 the software which was used in 2007. Our Windows gets updated every year, Windows 8, 9, 10. तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि जो इंडस्ट्री पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड है वो सॉफ्टवेयर्स भी हर साल अपडेट होते होंगे. एंड देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स टू डू लॉट ऑफ, इफ यू वांट टू डू वाटर देयर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर. इफ यू वांट टू डू crowd, there is a separate software for that. If you want to do live action compositing, there are separate set of softwares for that. So give or take, you should be able to know which softwares are there in the market right now. क्योंकि लेट्स फेस इट, अगर आप वो सॉफ्टवेयर पढ़ते हो तभी आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है. बिकॉज कंपनीज को ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है कि आपको ये सॉफ्टवेयर आना चाहिए और यू शुड बी एबल टू दिस, you should be able to do this and that. So when it comes to movies, of course, animation का सबसे ज्यादा यूज, मेजॉरिटी ऑफ यूज मूवीज में होता है. आजकल आप अगर नेटफ्लिक्स की कोई एक सीरीज भी देखते हो विच इज नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, उसका भी बजट 200-250 करोड़. तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स. एंड व्हाट हैपेंस इज, guys, this is I'm very happy to tell you that worldwide India is called as hub of animation. यहाँ पे इतने अच्छे और इतने अच्छे कंपनीज है, इतने अच्छे आर्टिस्ट है, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट, दैट यहाँ पे बहुत सारे मूवीज का काम होता है. लाइक you name a project, out of 10 projects, 8 projects at least must have been completed in India, visual effects and animation work wise, जिसका more than I would say 70 to 80% काम इंडिया में ही होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक फॉर रोबो 2 ऑफ रजनीकांत. मूवी आउटसोर्स किया गया था किसी फॉरेन कंपनी को, एंड दैट कंपनी हैड देयर मेजॉरिटी ऑफ देयर आर्टिस्ट इन इंडिया. तो उस मूवी का काम बाहर जाके अपने ही देश में आके और यहीं पे इसी आर्टिस्ट ने बहुत आई वुड से 80% मूवी भी यहीं पे किया गया है. इट वुडंट बी रॉन्ग इफ आई से दैट. सो माई पॉइंट इज, गेम ऑफ थ्रोन्स ले लो या कोई भी मूवी ले लो, तो अगर उसका काम इंडिया में होता है तो व्हाई आर वी नॉट सो मच अवेयर अबाउट इट? क्योंकि दिस इंडस्ट्री अ लिटिल बिट ऑफ, इट वाज अ हिडन इंडस्ट्री in terms of big companies, in terms of projects which are done. Mostly companies को अगर कंपनी डायरेक्ट काम नहीं ले रही है क्लाइंट से, तो उनको अलाउड नहीं होता है ये बताना कि वी हैव वर्कड ऑन दिस मूवी. सो दैट बिकम्स वेरी that makes this industry a little hidden industry, in the sense कि लोगों को लोगों के अवेयरनेस में उतना नहीं है कि ये सारे मूवीज इंडिया में बने होंगे, या फिर यहाँ पे सिर्फ साउथ की मूवीज का विजुअल इफेक्ट्स बनता है. और इफ यू टेक चाइना आल्सो दैट मैटर, दे हैव देयर डिफरेंट विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री ऑल टुगेदर. So when it comes to movies, the majority of the budget goes to the artists, the companies, the visual effects and animation people. और हम लोगों को जब कोई भी हम लोग मूवी सुनते हैं, जैसे वो 750 या लेट्स से 75 करोड़ का मूवी है, मतलब 75 करोड़ का सिर्फ एनिमेशन का बजट है. बट ये सारी मूवीज फॉरेन के हैं. मोस्ट ऑफ द मूवीज, लेट्स फेस इट, मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड मूवीज गेट डन हियर एंड दे हैव अमेजिंग बजट. ये तो मैं बहुत कम, लेट्स से मोआना फॉर एग्जांपल, मोआना का बजट है 1100 करोड़ प्लस. तो ये सारा मोआना में रियल कोई एक्टर नहीं है. इट इज अ प्योर 3D एनिमेटेड मूवी.
उसमें रियल कैरेक्टर्स कहाँ पे आते हैं, सिर्फ वॉइस ओवर देने के लिए कैरेक्टर्स की, okay, this actor has given voice for this character, this actress has given voice for this character, but other than that, each and every penny is spent on this industry or in the 3D industry. सो दैट वे आप सोच सकते होंगे कि क्लाइंट से जब पैसे आते हैं तो फ्रॉम डॉलर टू रुपीज इट गोज 75 टाइम्स मोर, तो अपने लिए इट लुक्स लाइक अ बिग अमाउंट, बट फॉर देम, उनके लिए इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम अगर इंडिया से करते तो इट बिकम्स चीपर फॉर देम cost wise, and it becomes better for us because the pay that you get are from international standards, क्योंकि clients आपके बाहर के जो भी international या बड़ी companies है इंडिया में, they give you the payroll of a very good this thing because of very good rate, क्योंकि सारे clients अगर foreign के हैं, पैसे वहाँ के हिसाब से आ रहे हैं, तो of course it's a very big amount in India. So that is one of the reason animators get paid really well compared to any other sectors like IT, any other sectors like architecture or this thing. So what becomes more crucial in this is to get skilled artist. कंपनीज को स्किल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है, ऐसा नहीं कि see, जब आप किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, if you're working on a movie, तो कंपनी आपको बेसिक कंप्यूटर तो नहीं दे सकती, आपका काम ही नहीं होगा उसके ऊपर, यू नीड वेरी हाई कॉन्फ़िगर्ड मशीन्स फॉर दैट. सो उसकी वजह से कंपनी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, जो आप या फिर जो सॉफ्टवेयर भी उस मशीन्स पे लगते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. That is why the salaries are always going high and high because there are not skilled artists in the market. तो कंपनी जो आर्टिस्ट है उन्हीं को और ज्यादा सैलरी देके रख रही है. तो इससे क्या होता है कि जो भी बच्चे आउटडेटेड सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो लोग प्रॉपर कंपनीज में या बड़े कंपनीज में जाने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल लगता है. They have a lot of experience from a lot of companies to the big companies. Going out of India is very easy in this industry because the payment is very good, the work culture is very good, and और डिमांड है बहुत ज़्यादा इसकी. तो स्किल्ड होना ऑफ कोर्स इसमें, आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी इजी टू डू, it's difficult but it's fun, because end of the day you will be working on Spider-Man and stuff like that. सो एनिमेशन की वर्ल्ड वाइड अगर करियर अपॉर्चुनिटीज देखी जाए तो आई वुड से मूवीज आर द फर्स्ट वंस. देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, गेमिंग. आई एम श्योर everybody over here must be playing games, Call of Duty and Need for Speed. These are all old games which I used to play, but आजकल के इसमें हॉलो और जो भी गेम आप कंप्यूटर के ऊपर खेल सकते हो, PSP गेम्स, तो उसके अंदर द कैरेक्टर इज कमिंग, शूटिंग द शूट का वो ब्लास्ट हो रहा है, द अदर कैरेक्टर इज डाइंग. सो ऑल दैट इज अगेन डन इन एनिमेशन, क्योंकि ऑफ कोर्स वो रियल तो है नहीं. तो गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, गेमिंग में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड स्पेशली. एंड वी नो कंपनीज लाइक IT कंपनीज हम लोग को बहुत पता है, बट गेमिंग कंपनीज बहुत कम पता है. Like Ubisoft is there in India. It's one of the top 3 game development companies across the globe. Or games, let's face it, it's not going to die, it's only growing. The quality of games has improved, the concepts, बहुत सारे concepts है. So when it comes to gaming में दो sectors आते हैं अगर हम लोग opportunity के लिए देख रहे हैं. There are companies who does only trailers for games, guys. Trailers जैसे Blur Studio, Platic Image, these are very big companies. They do only trailers for the games. क्योंकि क्या होता है, गेम का ट्रेलर देखने के बाद ही आप गेम खरीदने वाले हो, राइट? सो द ट्रेलर हैज टू बी किक एस. एक ट्रेलर का बजट एक अपने हिंदी मूवी से तो बहुत ज्यादा होता है, पर बहुत ज्यादा होता है, एज इन 150-250 करोड़ इज एन वेरी एवरेज दिस थिंग फॉर अ 5 मिनट ट्रेलर और 12 मिनट ट्रेलर. आई एम सेइंग तो 12 मिनट के लिए भी अगर बजट इतना ज्यादा है, बिकॉज ऑडियंस वो ट्रेलर देख के ही गेम्स खरीदने वाले हैं. सो द मोर इम्प्रेसिव द you can go and check out some kick-ass trailers on YouTube. You can just go into CGI Bros. They have amazing content over there. So gaming is one of the biggest industry, I would say, after movies, or it's as good as movies because आज के डेट में सबके पास लैपटॉप है, सबके पास iPad है, सबके पास फोन है, सबके पास जियो है, सबके पास इंटरनेट है. तो इट बिकम्स और सबके पास पेंडेमिक के बाद बहुत सारा टाइम भी है.
and everybody is online, everybody is playing something or everybody is at least watching something. तो ये सब कहाँ कहाँ पे बन रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है, और who is doing this or how it's made. So animators are the one who do it. The CGI artists, computer graphics artists are doing it. So I always thought that it would be really fun to work in something like this rather than working for an IT company or rather than working for any other banking sector or any other boring sector. I always love doing sketching and painting. So जिन लोगों को book लेके basically पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, those students do very good in this industry, because there's not even one single day where you have to by heart something. It's all practical knowledge. अगर आप कुछ पढ़ भी रहे हो, it's more like you're reading color theory कि what colors looks good with what are the colors that can please the human eyes, या फिर कौन से colors use करने से कौन सा shot अच्छा दिख सकता है, what are warm colors. And so this is a practical knowledge what you're studying, and everything and everyday things goes really interesting because you're doing everything virtually. It's a fascinating fantasy world. The next sector where you get a lot of opportunities is let's say e-learning or education industry, I would say. Especially after pandemic, what has happened is everybody is going online. But as it is, there are a lot of international schools as well जो काफी कुछ बच्चों को डायरेक्टली एनिमेशन के एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू दिखा के एजुकेशन देते हैं. सो दैट व्हाट डज दैट डू, व्हाट डज दैट रिजल्ट्स इनटू. जैसे कहते हैं ना कि एक one picture speaks 1,000 words. So one video definitely speaks a lot more than that. It becomes very easy for us कि हिटलर का एक मूवी देख लिया तो मुझे बहुत अच्छे से ज्यादा समझ में आ जाएगा कि what he is about, rather than going and reading his autobiography or books on him. So of course reading is a little boring in terms of learning. When you want to learn faster and quicker, videos are the best ways, and especially animated videos. Byju's जैसी जो companies है, yeah, there are a lot of platforms these days who have this animated e-learning videos. So chemistry, maths, everything becomes easier for kids to learn. It might sound आप लोगों को ये बहुत casual लगता होगा, but trust me guys, this industry is very big. E-learning में आप आपका खुद का, if you know a little bit of animation, आप आपका खुद का e-learning start teaching anything online. If you see Skillshare platforms like Skillshare, or even on YouTube, you can share your you can share your skills, you can share your knowledge, and you can get paid. So that way e-learning gives you a lot of I would say बहुत ज़्यादा exposure देती है आपको e-learning में. और ये सारी चीज़ obviously बनाई जाती है again in animation. Let's take the next industry जहाँ पे animation में बहुत ज़्यादा scope है, which is a multimedia industry. Multimedia फिर उसमें बहुत बहुत कुछ आ गया. Let's say you want to make a commercial video for a company. Let's say you want to make a video for, आज के डेट में Instagram, social media is everything. So what you see is what you sell. So a lot of companies go take help of animators or animation companies to make a short videos, a commercial video. So that is a very big part of this industry. You can do this as a freelancer, if you know how to do it. And in multimedia, then AR, augmented reality is there, then virtual reality is there, जहाँ पे आप glasses पहन के movie देखते हो. Not the glasses जो हम लोग movie theater में जाके जो stereo glasses देखते हैं, that is a different 3D scene. But I'm saying virtual reality, as in you wear the glasses, you feel like you're there in that particular animated, simulated environment, or it gives you a little feeling of a 360 degree that you are there. So that is virtual reality. I'm sure आप लोगों को ये पता होगा. आप लोगों को ये भी शायद से याद होगा कि कुछ टाइम पहले सैमसंग ने स्पेशल स्क्रीन्स निकाले थे where you can put on the VR glasses and watch stuff in 3D. But वो क्यों नहीं चला ज़्यादा? There are not lot of content to show. ठीक है, लोगों ने VR के ग्लासेस के टीवी तो खरीद लिए, पर उसके अंदर आप दिखाओगे क्या? कितने ज़्यादा ऐसे 3D मूवीज है या VR के आउटपुट्स है जो आप इंजॉय कर सकते हो? There are not lot of stuff.
बहुत हो गया. आप हॉरर थीम पार्क में अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं, सो यू सी लॉट ऑफ हॉरर स्टफ, एंड so those are the one very small sector of this. But again, we are technology है, developed है, पूरे वर्ल्ड वाइड में थीम पार्क्स निकल रहे हैं इसके, बट दिखाने के लिए कंटेंट जो है वो कौन बनाता है? एनिमेटर्स बनाते हैं, राइट? एंड ऑफ द डे इट ऑल हैज टू बी डन ऑन अ सॉफ्टवेयर, on a computer. It all comes out of imagination, so of course nothing is real, so you have to make everything. And so that way media, actually multimedia has a lot of streams to this. Like let's take advertisement for example. I'll just give, I'd like to give you this thing. Go check out advertisements. Out of 10, you will find at least 8 advertisements use animation. अपना जो डिटर्जेंट का भी ऐड होता है ना, टाइट का ऐड है, सो दे शो द गंदा कपड़ा ऐसे वॉशिंग मशीन के अंदर ये हो रहा है, हिल रहा है, द वाटर इज फ्लोइंग अराउंड इट, फिर कैमरा जूम होके उसके अंदर का गंदगी वो निकाल रहे हैं. सो ऑल दैट इज नॉट रियल, राइट? ऑल दैट इज डन इन एनिमेशन. सो एडवर्टाइजमेंट इज अ रियली बिग इंडस्ट्री. और बिग इंडस्ट्री से आपको तो बड़ा ही पता है एडवर्टाइजमेंट कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी चीज को सेल करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है. एंड टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, टू मेक इट मोर interesting and attractive, people tend to use a lot of visual effects and animation in advertisement. और जो पैसे भी स्पेंड किए जाते हैं टू मेक एन एडवर्टाइजमेंट, दे स्पेंड अ बम अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज उसी के थ्रू उनका प्रोडक्ट सेल होने वाला है. देयर इज नो अदर वे दे आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट. आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि थम्स अप की एक बॉटल जो है, कांच की बॉटल, 10 रुपए की जो पहले मिलती थी, वो उसका एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट इज मे बी 2 रुपीज और 80 पैसा, बट द रेस्ट ऑफ द मनी इज गॉन इन टू एडवर्टाइजमेंट. Of course, the actors are there, but these days, how many actors do you see? And though you see actors, how many and how much of animation you see in that? So the budgets are growing, the usage is growing, the audience is growing. So that is why this इंडस्ट्री की, आई डोंट थिंक यू, आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि या हम लोगों को ये समझने की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, समझने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और ये इंडस्ट्री ग्रो ही होने वाली है. बिकॉज लेट्स फेस इट, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप वॉचिंग एडवर्टाइजमेंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप वॉचिंग टीवी सीरीज. आजकल के हिंदी जो अपने लोकल इसमें भी सीरियल्स बनते हैं, उसमें भी देयर इज lot of animation used in that, like New Mahabharat, New Ramayan, and Nagin or something. There was a very lovely ad about it. So animation का and visual effects का advertisement में बहुत बड़ा ये कह सकते हैं बहुत बड़ा हाथ है, या फिर ये इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे यूज करती है एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स का प्लेटफॉर्म. लेट्स गो इनटू मैकेनिकल इंडस्ट्री. अब आप सोचते होंगे मैडम मैकेनिकल इंडस्ट्री में एनिमेशन कहाँ से आ गया? सो बिफोर यू डू एनी पार्ट, बिफोर यू मेक एनी न्यू मशीन और एनी न्यू कार और बाइक, और अब अगर कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन भी लगने वाला है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, कुछ भी बनाने से पहले दे मेक अ 3D मॉडल ऑफ इट. छोटा सा एक 3D मॉडल बना के दे शो इट टू द क्लाइंट, दे शो इट टू द बैंक्स और टू द कस्टमर्स कि दिस इज हाउ दिस वर्क, दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट इज. और कार पहले डिजाइन करते हैं एनिमेशन में कि ऐसे दिखेगी, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक, एंड इफ दैट लुक्स गुड देन इट मेक्स सेंस टू पुट मनी इनटू दैट. क्योंकि आप सोच सकते हो, अगर अगर BMW ने स्टार्ट कर दिया कि गाड़ियां बस बनाते जाओ, फिजिकल एक एक कार का मॉडल बनाओ और फिर सोचो कि वो अच्छा दिखता है या नहीं, बट तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे, मैन पावर, एवरीथिंग इज जस्ट वेस्टेड इफ द मॉडल इज नॉट टू योर यूज. बट वही एनिमेशन में आप, it's of, you know, uske comparative, this costs nothing for them to get a model done in 3D. तो जब 3D में मॉडल अच्छा दिखता है, 3D में उसका ये अच्छा दिखता है, then they go out to the actual product making part. This is a very big use of animation in mechanical industry. Medical industry uses animation on a very big level these days. If you go, suppose आपका कोई critical operation है, though it's a teeth stuff, though it's your bone stuff, if it's something, someone needs a major surgery on that,
So what these doctors or hospitals these days they prefer, they show you the video कि this is how it's going to work, हम लोग फिर ये बोन ऐसे करेंगे या ये ऑपरेशन ऐसे होगा. I'm sure dentist के यहाँ पे it's very common to show the root canal process and all that. So medical industry uses this on a very big scale these days because it's very जो मैसेज जो पहुंचाना है या फिर मेडिकल यू कुड से ट्रेनिंग इंडस्ट्री ऑल्सो यूजेस जो मेडिकल सिखाते हैं जहाँ पे आप सीखते हो वहाँ पे भी एनिमेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उनको सिखाना है तो हर बार एक डेड बॉडी लाके कट करना मे बी इट्स पॉसिबल इट्स नॉट पॉसिबल बट वंस यू हैव अ वीडियो डन आप एक बार एक वीडियो बनाओगे किसी सर्जरी का कि भाई ऐसे ऐसे होता है so that video is there forever for all of their students for all of their generations or for all of the next batches to come ये एनिमेशन का यूज बहुत ज्यादा आज के डेट में यूज हो रहा है मेडिकल में because things just get a lot easier that way and things are very easy to understand that way again like अगर आप कोई बुक पढ़ते हो या उसके ऊपर अगर आप वीडियो देखते हो तो वीडियो देख के आप बहुत ज्यादा जल्दी समझोगे बिकॉज इट्स हैपनिंग राइट देयर इन फ्रंट ऑफ योर आईज. लेट्स टेक आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट इंडस्ट्री उसमें भी कोई भी इफ यू वांट टू गो एंड बाय अ फ्लैट और इफ समथिंग न्यू इज कमिंग अप तो what they do is they create a 3D virtual 3D architectural walkthrough of the place. This is how it's going to look जब ये बिल्डिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद ये ऐसे दिखने वाला है. So that attracts the customers to buy the flats, to buy the commercial places in there. So आज के डेट में इसका भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है because घर बन ही रहे, flats are making and everybody wants to sell and animation makes everything looks amazing. So why not use it when it's there at your disposal. तो ये हो गई कुछ इंडस्ट्रीज जहाँ पे एनिमेशन का काफी यूज होता है. On top of that, I would love to tell you, we do have some time. I would love to tell you कि career opportunities में, when worldwide career opportunities में एनिमेशन एक बहुत ही अलग लेवल पे स्टैंड होता है. For example, अगर आप if you're an engineer, if you're a mechanical engineer, you will be working for some firm, right? But in animation, you can work for yourself. You can just sit at home. You can start making your own videos. आपको आप पहले कुछ experience ले लीजिए. Work in a gaming company, work in advertisement company, work in lot of movies. Then you understand कि how exactly things are done. Then what you can do is you can sit at home. You can start making your own short film, guys. Film making जिसको करना है, I would सजेस्ट एनिमेशन की तरफ भी वो लोग थोड़ा बहुत देख ले because I'll give you a very good example. Monster Hunt is a movie. You can Google it. It's made by Raman Hui. He's an animation artist. He was the one when जब Shrek बन रहा था वो टाइम पे उन्होंने I think he was one of the designing character department. But एक animation artist या एक animator जैसे मूवी बना सकता है जैसे एक शॉर्ट फिल्म बना सकता है वैसे वो बहुत ज्यादा जैसे सपोज लो 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा एक लाइव एक्शन मूवी का जो डायरेक्टर है उससे अच्छा बना सकता है. दैट इज द पोटेंशियल ऑफ एन आर्टिस्ट बिकॉज वी थिंक्स इन टर्म्स ऑफ लाइट्स एंड कलर्स एंड शेप्स एंड ज्योमेट्री एंड एवरीथिंग. So that आप you can watch anime. You must have noticed this animated movies. आप कितने बार भी देखो ज्यादा बोर नहीं होता है आपको. I can watch Ice Age anytime, any day, Tangled anytime. So the stuff is so interesting that you feel like coming back to it every now and then. So that way animation में excuse me. So that way animation industry में आप you can work for yourself. You can be a freelancer. आप किसी भी advertisement का या छोटे project का खुद घर पे बैठ के काम ले सकते हो. There are a lot of websites from where you can get work from all over the globe. उससे वहाँ पे what happens is suppose मेरी एक कंपनी है I have a water bottle company but I want to sell this. तो मुझे एक ad चाहिए. मुझे एक उसमें थोड़ा बहुत अच्छा visual effects और animation भी डालना है. तो फिर मैं क्या करती हूँ मैं एक वेबसाइट पे जाती हूँ. So there is this portal where there are a lot of portals actually जहाँ पे वर्ल्ड वाइड उन लोगों को डायरेक्टली कंपनीज के पास जाना अफोर्ड नहीं होता है बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव या फिर दे डोंट नो लॉट ऑफ कंपनीज. सो व्हाट दे डू इज दे गो ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, दे पोस्ट व्हाट दे वांट and all over the place whatever artists are there from all over the world
they bid for it, and if your work is good, if you're okay with the price, then you get the job. It's as easy as that, and it's as simple as that. If you're good at what you do, animation में आपको कभी भी ये नहीं होगा. You will be always be able to make money for yourself no matter what. You can do your own short films, you can make your own concepts, you can sell it to the production houses, you can see, this is an artistic industry, right? Let's say, suppose ये let's say this is a very good model, मैंने suppose animation में बनाया है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, जैसे हल्क जैसे अच्छा है, उतना अच्छा है, तो ये आर्टिस्टिक चीज है. इसको मैं 50 रुपए में भी बेच सकती हूँ, इसको मैं 5,000 में भी बेच सकती हूँ, इसको मैं 5 करोड़ में भी बेच सकती हूँ, बिकॉज द डिटेलिंग इज दैट गुड. आप कोई भी मूवी देखते हो तो मूवी का बजट उसके स्टैंडिंग ओके in this industry, because you'll always used to love when I was student in animation. I thought कि oh uniform नहीं होता है, nice, I can wear whatever I want. And there's a lot of freedom in this industry. There is, in terms of choosing what you want to do, in terms of choosing whom you want to work for. If you're good, companies will call you. This is an industry. This is the, let's just put it in a very this thing. अगर ये पूरा एनिमेशन का स्कोप और कैसे होता है एंड ऑल दैट, मूवीज में भी होता है, गेम्स में भी होता है, एडवर्टाइजमेंट में भी होता है. सो इन सब चीजों में एनिमेशन यूज तो होता है. हमने ये भी सीख लिया कि, या फिर अभी तक ये भी समझ लिया कि एनिमेशन में अपडेटेड सॉफ्टवेयर पे या जो लोग मूवीज में काम कर रहे हैं प्रोडक्शन के लोगों से सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज अपडेटिंग, इज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज जस्ट डेवलपिंग. हम लोगों ने ये भी देख लिया अभी तक कि एनिमेशन में आप हाउ कैन यू वर्क फॉर योरसेल्फ. यू कैन बी अ ऑनलाइन डिजिटल डिजाइनर, यू कैन बी a freelancer, you can start your own company like I did. You can do your own movies. That is what it should be looking towards, because ऐसे भी if you are learning everything, then why not, अगर आप सीख ही रहे हो तो खुद के लिए क्यों नहीं बना सकते हो. You can make your own movie, you can put your own imagination in a movie, and you can sell that short film for crores of rupees, guys. This is that kind of industry. वो कहते हैं ना, sky is the limit. This literally applies in this industry. So worldwide career opportunities with this is just growing. और ये एक ही इंडस्ट्री है, मैं अभी आपको ये बताना चाह रही थी कि ये एक ही इंडस्ट्री है जिसमें जॉब वैकेंसीज पेंडिंग है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जॉब वैकेंसीज with a very good payroll which are just pending right now, because they are not skilled artists. Animation कर तो लेते हैं लोग, but they don't know exactly what it is. जो कुछ भी सिखाया जाता है, they are just limited to that. Excuse me. तो जो कुछ भी सिखाया जाता है स्टूडेंट्स का उतना ही एक्सपोजर होता है. इट बिकम्स वेरी क्रूशियल कि आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ो और choose this as a career opportunities, because it's different, you know, it's fun. Excuse me. It's really fun working. किसी दिन आप you're working on a tiger shot, or sometimes you're working on a fire shot, or sometimes you're working on a movie, sometimes it's a game, sometimes it's an advertisement. So you will never get bored in your life if you're working this for the rest of your life. I'm not saying it's easy. It takes a lot of work, but it's interesting work. You will, जब फाइनल बड़े थिएटर में अपना ये लगता है, मूवी लगता है, पूरी मूवी खत्म होने के बाद लास्ट में जितने भी लोग होते हैं, they are looking at the credits, they are animators, समझ लेना. Because we, जब आप अपना आउटपुट इतने बड़े स्क्रीन पे देखते हो, it's a very different feeling. And when your name comes in the credit, okay, visual effects artist Sapna Madne, it feels proud that I feel very proud that you get credit for what you do. You're known for your projects, and that way freedom is, again, like I said, if you're good in this, you can do miracles in this industry.
So yeah, this is the scope of the opportunities, the career opportunities for visual effects and animation worldwide. I'd like to introduce you to Taksha Animation and Art School. We are based in Pune. We do not have any branches so far. We are in partnership with Savitribai Phule Pune University. So this is the first time where production design professional courses are launched. We have a 4 months graphic design course, we have a 6 months UI design course, and we are specialized in animation. We have a 3 years BSc course. This is the first time you can do BSc in animation, though you are art or commerce background student. And I would say this is a great opportunity to study with Pune University. We have a 1 year visual effects course. Excuse me, guys. I will leave the description for the college and this thing below to this video description, and you can, if you have any queries, if you want to get more information about the courses that we have to offer, the courses which recently Pune University has launched, you can just leave it in a comment or contact us. Thank you, sir. Thank you very much. It was a pleasure explaining about this industry, and definitely looking forward for more and detailed sessions about this because there is not a lot of good stuff. Yeah, actual practicals कोई ये नहीं है. You know, the information is not available. So I'm looking forward to give you a lot of information, and thank you so much for your time. Thank you so much for your love. Good day. See you.